Let's go, same Monday. Different Monday, same energy, boys. Let's go. How we doing, guys? How we doing, boys? Mega Money Monday is here, guys. Mega Money Monday is here. Let's go, guys. Let's go. Let's go. 80 people in the chat. How about we press some like? I cannot see shit in my these classes, so I'll have to change it back in a bit after we open the chart. Alright. By the way, I hope you all are taking advantage of this new 50% off sale. Are we or are we not, guys? Look at this crazy deal Lucid is going on right now. Milk them while they are here. Don't cry after they are gone. Alright. They are here for a while. Milk them as much as possible. One of the best firm I have ever traded with. I have more than $50,000 in payouts with them. $51,000 to be precise. And I can take out few payouts this week as well. So make sure to use code game while you do. Alright. How we all are doing, guys? How we all are doing? यो यस सर बट ये निकाल दूंगा मैं थोड़ी टाइम में भाई. मुझे कुछ दिख नहीं रहा चार्ट्स में. मुझे अपने पावर के निकलवाने पड़ेंगे, तब करवा देंगे. बस बढ़िया. लेट्स फकिंग गो वंडरलस्ट. आज बात की मैंने वंडरलस्ट से. वी हैव हैड आवर फर्स्ट कंसल्टेंसी कॉल विथ वंडरलस्ट. So yeah, we did. I think we did pretty good. Did we or did we not? Oh fuck, I can see pretty life in HD mode, to be honest. How are we doing, boys? How are we doing in the chat? It was great talking to you. Yes, I hope you liked my advice, by the way. कैमरा क्वालिटी आई थिंक सेम ही है, बस वो लाइटिंग थोड़ी चेंज है. अभी मैं थोड़ी और चेंज करूंगा धीरे धीरे. ऑफिस सेट हो जाएगी फिर ऑफिस का वो वीडियो जो लोग बनाते हैं. मेरे ऑफिस में ऐसे कुछ है नहीं बनाने लायक, बट मे बी आई ट्राई टू मेक वन टूर वीडियो. So yeah, let's go on the list. Crazy. ऑफिस टूर सुन अभी सेटअप हो रही है. स्ट्रीम में लैग नहीं है क्योंकि वो मैंने बोला था ना, पीसी सब कुछ इधर आ गया है. पीसी सब कुछ इधर आ गया है. वी गोना पुट गेम क्राफ्ट लोगो बिहाइंड some kind of certificates as well. We are going full mode on influencer mode this year, but the legit one. The only difference is we are legit. Right? Did you see my post on Instagram story? I'm not buying BMW. I cannot afford BMW. Yeah, not someone with 750k in payout. But
बट गाइज लूसिड के जो 2 अकाउंट थे उसमें अभी भी पे आउट के लिए मैं फ्लिप कर रहा हूँ, बट मैं 5वां पे आउट नहीं लूंगा। याद रखो, मैं 5 आवाज ठीक आ रही है ना? जस्ट लेट मी नो इन द चैट। तो मैं 5वां पे आउट नहीं ले रहा, इवन दो आई विल बी एलिजिबल टू टेक पे आउट इन 2 days और द डे आफ्टर टुमारो, क्योंकि अगर मैं पे आउट ले लूंगा तो वो लाइव मूव कर देंगे। तो मैं उस अकाउंट्स को सेफ रख रहा हूँ अभी के लिए, क्योंकि मैं ज्यादा बना भी नहीं पाऊंगा उसके लिए। तो हर हर महादेव, अक्षर भाई, हर हर महादेव। इधर आप $51,000 पहुंच गए 2026 के लिए, बट वो बाद में रखते हैं। पहले मैं पे आउट नहीं लूंगा, मैं 3 अकाउंट और परचेज कर लिए, उनको पास करने का ट्राई करूंगा, उनको रन अप करूंगा, जिससे इवन इफ आई एम गेटिंग मोर टू द लाइव आई विल हैव बिगर बफर। वो मेरा टारगेट है। उनको तो मैं कभी निकालने के लिए एक पे आउट निकाल लूंगा, वो लाइव शिफ्ट कर देंगे। अब लाइव अकाउंट आने में लिए एक महीना लग जाएगा। इससे बढ़िया मैं फोकस करूँ 3 नए अकाउंट्स पे, उनको ट्रेड करूंगा। आज के लिए वो 2 अकाउंट फ्लिप हो चुके। वी गोना ट्रेडिंग evals and I have lost around $3 to $4,000 recently in last 1 month on the evals. But if you see net ROI, we are way much in the profit. वही चीज है, but again my budget is $5,000, so I'm staying below that $5,000 per month, and that is all matters for now. So I hope everything is Wi-Fi डलवा दिए इधर। Wi-Fi is okay. I hope nothing is lagging. I hope nothing is lagging for anybody. Everything is smooth, guys. Let me know in the chat. Okay, चार्ट पे आते हैं। If you see, we opened with the gap on NQ, 15-minute gap, a big huge gap. We dumped, and since then we have been coming towards to that gap. Means that's gonna work as a magnet for me. It always has been, right? If you know ICT concept, gap's gonna work as a magnet, and market did try to go back up again and then failed to reach there actually, because there was the FPG area rejection, जो भी बोलो तुम्हारे हिसाब से। But now what I am thinking, that if we invert this whole 15-minute FPG IFPG area, we can be heading to the gap, right? And that's gonna be our drawn liquidity. What is drawn liquidity? How do I define that? This is how I define that. I look at the market, new week opening gap is there, everything is there. If we invert this bullish, I'm not saying that we're gonna go up. If we do, if I see evidence that that market is gonna go up, yes, we'll take a longs, right? Again, I do not stick to my bias that much. मैं इतने हार्ड बायस नहीं रखता, क्योंकि there can be a short setup as well. After taking out this high, there can be a short setup as well, right? To this low, and then it can go into that, right? That can happen as well, right? So we gotta stay neutral, but little bit biased towards longs. That's all I have in my mind. I'm gonna draw highs and lows now. This is the high I can see. So that's what I'm gonna draw. It's pretty easy and simple. I don't do anything else. I'm just like you guys. Okay, that's a high that I like. That's a low I like. We're gonna see. नेक्स्ट भाई शर्मा लोगे क्या मुझे? ये क्रियो वाला है, सस्ता वाला, 3,000 वाला, 3-4 हजार वाला कुछ। Am I looking damn good, guys? Fuck. Should have brought which trade on which time frame? I trade on 1 minute forex. 1 minute. अभी के लिए थोड़ा रहेंगे। वी गॉट 30 सेकंड टिल ओपन। अरे वो हो गया शर्मा जी, वो हो गया, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था तो मैंने निकाल दिया। दिखना जरूरी होता है, वरना ट्रेड कैसे अच्छी मिलेगी। जैसे ही ट्रेड खत्म होते हैं हम वो पहन के ना चले। दादा हाउ कैन मेंटरशिप कैसे बाय करनी है? मेंटरशिप अभी ओपन नहीं है मेंटरशिप अभी ओपन नहीं है। ओपन होगी तो मैं बता दूंगा, अभी क्लोज है। अभी मैं मेंटरशिप से ब्रेक ले रहा हूँ, तुम्हें जरूरत नहीं है एक्चुअली। तुम मेरे सारे लाइव वीडियोस यूट्यूब पे वो निकाल के देख लोगे, तुम्हें आ जाएगी मेंटरशिप।
सेम जो मेंशन करता हूँ वही चीज है. एंड वी आर ओपन बॉयज. No, no, there is no pressure. People have been copying me since ages, so it's fine. There is no. Don't worry, guys. Don't worry. There is no pressure on me. I'm gonna risk again. I'm telling you guys, I'm gonna risk heavily. Oh my god, गैप तक डायरेक्ट पहुंच गया. ऐसा भी नहीं कि थोड़ा सा चांस दे दे. I have used code. Thank you for using code. Thank you. Appreciate everybody supporting me. W community. What do you guys think? Should we open a Telegram just like a scammer does for community, or should we open a Instagram group or something like that where I update small things there? वो क्या होता है community वाली चीज कुछ where we can chat, right? What should we do? Telegram. Thank you Darshan for using code. Do you guys want oh my god, you guys want such a scammer mentor? Yes, Lucid 50k is good. Dino Flex. I am using Lucid Flex account. I am also using Lucid Flex account. So yes, they are good. Okay. As I said, we have taken out the highs. We're gonna be very Instagram broadcast वाली चीज. अगर किसी को पता है तो Instagram broadcast. What's up, S? Welcome to the stream. Alright, boys. Alright. Make sure you are liking the stream. I'm not saying anything. Beautiful background. Background will get, I mean, even more beautiful. Let's see if these 30-second inverts, guys. If these 30-second inverts and we see some bullish closes, we may try one small long with such a small SL. Okay. Okay, I'm gonna buy, guys. Okay, I'm just buying a small quantity here, not a lot. Stop is just at 30 points. 30 points to the. I'm gonna get a break even as soon as possible, because this is such a as soon as that high gets taken out, and that's my stop to the break even. If it gets me out break even, it's all right, and it's gonna do it 18. Nah. Fucking bishop shit. I would really like the entry, but again with the lower, I'm not entering, guys. I'm getting out break even. It's fine. We ran up to 22 points. Far. I just wanted it to push, continue pushing it, but it's fine. It's fine. It's fine. We do not want to take SL on the first trade. If we do get a re-entry somewhere around here, okay, but I'm gonna wait and see. Oh, my bad. Somebody must. Alright, somebody should have told me that. Okay, I'm not entering, guys. Okay, wait. So we got stopped out on 17, 18. जहाँ भी कहाँ था entry? Break here. Okay. I'm not looking at ES on 30-second chart, guys. ES, oh, could have bought from this gap alone. Stop कितना बनता? 17, 16 point. Alright. We chill out, guys. We don't fuck around. We played our part in the market. We took a long. It did not work out. It's fine. I know it ran through what, 17 to 40. For me, it's
orange box are FPGs, bearish FPGs. yes, 1 minute invert, oh my god, yes का चार्ट भी नहीं खुला, shit, my bad. Wow, such a new setup, such a newbie. 2 to 3 trades on a single account. Oh. ES का कोई 30 सेकंड बेरिश एफपीजी नहीं था. आई एम ऑल गुड. ES ने गैप फिल कर दिया. वाह, तो एनक्यू तो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है. गैप तो फिल होगी एनक्यू की. इसको हटाओ बे, ट्रेडिंग के टाइम पे इसको छोड़ा कर देते हैं. ES has filled the gap, so I think एनक्यू. भाई तुम चैट में कुछ लिख नहीं रहे हो कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा? Everybody is focused on trading, guys. Everybody is focused on trading. All right, we are heading to the downside, I guess. Focus. All right. You don't need to type in. It's fine. Chill out. My bad Discord यार, मुझे पता ही नहीं चला. New setup, sorry. वैसे भी ट्रेड ब्रेक नहीं बनता. Focus. Nice. W. See, now we are not jumping on the shorts because ES is holding strong. One thing. Plus, again, even if we do go down, there is not much room for me to target. So we just gonna chill out, play market, let it play its part. Because अगर तुमने notice किया होता, तो first 15 minutes we are chopping every day. So how about we tried our part? कि इधर से लॉन्ग मारा, ब्रेक ऑन हो गए, बड़े जो भी हुआ छोड़ो उसको, नहीं चीजें. अब चिल मारो, अब मार्केट को क्लीन डायरेक्शन देने दो. 17 से उसने, मेरी एंट्री थी 1650, इट रैन 336 टिल 40, मीन्स उसने मुझे 25 पॉइंट्स दे दिए थे. लो चेंज हो गया. ES is holding. NQ is back at it, and I don't see anything too long on NQ, even though I can see it's going back up again. NAS 100 search मार लो Sunny, because you don't have, sorry. If you don't have data, you won't get the NQ chart. तो NAS 100 सर्च मार लो, चार्ट सेम ही है. अगर तुमको NQ ही चाहिए तो NQH 2026 सॉरी NQH 2026 सर्च मार लो, मिल जाएगा. Alright, ES is holding strong, and I mean, अपनी आर्मी के लिए नाम वो ग्रुप में रख देंगे गाइस. कैन यू से यू स्टार्टेड मेकिंग गुड मनी फ्रॉम FX itself? I started making good money from Top Step before even FX. So yeah. Had bought your accounts 200, अभी मिल जाएगा. अगर if it's with the Lucid Trading अभी मिल जाएगा. रिफ्रेश मान लो, मिल जाएगा कम. अगर if you have followed all the rules मिल जाएगा.
भाई प्लेटफॉर्म समझना बहुत डिफिकल्ट है। बुक कंसल्टेंसी के लिए कॉल बुक कर लो। मैं तुम्हें लिंक भेज देता हूँ थोड़ी देर में। आफ्टर द स्ट्रीम आई विल पोस्ट अ लिंक ऑन द इंस्टाग्राम। जो मैं बोल रहा हूँ अभी जो चैनल पे है, इफ एनीबडी हैज अ प्रॉब्लम फ्रॉम, अगर तुम देख रहे हो मुझे ट्रेड करते हो, अगर तुम्हें पता ही नहीं है स्विच कैसे करना है फॉरेक्स से फ्यूचर्स के लिए, सॉरी फॉरेक्स से फ्यूचर्स की साइड, और आप सीरियस हो, तो मैं 10-15 स्लॉट खोल दूंगा। You will get a consultancy for free. I'm not qualified for that, but again I will have people tell you how to trade, not how to trade but how you can trade with the platform on prop firms on a futures side. Okay, so make sure you are the first guys to book it, because मुझे पता है zero, no fees use. You just you use my code, that is enough. I am earned from that. I don't need any more money from you guys. Not a scammer here. But in the future there will be a minimal fees, 100-200 रुपये, जिससे लोग जो स्पैमर है वो ना आ जाए और तुम्हारे ना ब्लॉक करे। पर आज के लिए मैं 10-15 स्लॉट खोल दूंगा फ्री के लिए। मेक श्योर यू आर द वन टू बुक इट, कीप रिफ्रेशिंग, so you will get it first. I don't want people to block your ways. Okay, गोल्ड मैजिशियन वो ओपन कर, टिकट ओपन कर लो, वो हो जाएगा। ओके, हो जाएगा। अगर यस, अगर ये पूरा इन्वर्ट करती है बुलिश एफपीजी, फिर देखते हैं शॉर्ट्स की साइड। टाइम स्ट्रीम के बाद तरह तो अपडेट कर दूंगा, स्ट्रीम के बाद तुरंत ही मैं खोल दूंगा। ओके, मैं स्ट्रीम पे ही खोल दूंगा, लास्ट के 10 मिनट स्ट्रीम पे ही खोल दूंगा, तुम बुक कर लेना। अगर 10 ऐसे लोग हो यू आर रेडी टू ट्रेड, ओके, कॉल उनको ही आएगा इफ यू आर रेडी टू ट्रेड एंड you just wanna shift, you will be getting call tomorrow, making you understand how things works. You भाई आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। if you are buying account in future, we are not forcing you to, we are just helping you guys shifting. Yes, it's a new office. मंसूरी भाई आपको आपको कैसे पता चला पहली बार में? there is no next, अभी नहीं है। All right, NQ is going towards the lows before again going into that place. Yes, closing 5 minute pair is 1 minute, everything is closed. Jai Dwarkadhish, super. Can we meet at your office? We can, but not right now. It's 40% off on Tradify. Thank you. It doesn't love you, नहीं साले खतरे। बियर पी रहे हो क्या? यस, ऑन स्ट्रीम इन गुजरात वी ड्रिंक बियर। लेट्स गो, लेट्स गो। अगर मैं ईएस में शॉर्ट मारना चाहता हूँ तो मुझे क्या चाहिए कि बुलिश स्ट्रक्चर बने, उसको इनवैलिडेट करे और उसको निकाले। गोल्ड पंपिंग करे जी। गुड लक इफ यू आर ट्रेडिंग विद गोल्ड। लेट्स गो क्रेजी भाई, डब्ल्यू। अब गूगल के बारे में मत पूछना।
अरे शुभ भाई, देयर इज नो, नहीं फ्री में रीसेट क्यों देंगे, वो ऐसे ही लेते हो। ऐसे कहाँ रखे? ऐसे, हाँ ट्रेड तो लिया नहीं हमने। हेलो, असल की कहाँ बात आ गई, ट्रेड तो लिया नहीं हमने। ओके, द lows that I was looking at has been taken out. So if we go up there, we'll see how we can do. Bullish SMT है, anything can happen guys, anything can happen. Okay, NQ is at the lows, ES is trying to get to that lows here. 15-minute lows on, yes, those are the ones. Okay, NQ is already at the lows. So both indices are playing different part right now. So it's very tricky to take trades. Yes, रूल सेम है, कैफीन जो बंदा पूछ रहा है, बट कंसिस्टेंसी नहीं है फंडेड अकाउंट्स में, फ्लैक्स अकाउंट्स में. सो या दैट्स वन बेनिफिट. वंस यू गेट टू द फंडेड अकाउंट देयर इज नो कंसिस्टेंसी, यू कैन मेक एज मच एज पॉसिबल. क्योंकि आपके पास डेटा नहीं होगा कॉस्मिक स्टोरीज. हाँ वही है, कितने में क्लोज हो रही है 4 आवर कैंडल? 12 मिनट में क्लोज हो रही है ना, वेट कर लेते हैं. बफर भी नहीं है, नहीं नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है. 5 दिन बनाओ और आधे पैसे निकाल लो, बस मिनिमम पे आउट रिक्वायरमेंट है. फिल्म सही लगती है, नो ड्रामा. यस. Alright, let's see guys, if we do close strong, okay, we have 4 hour FPG again. वो हम नहीं देखते तो अभी भी नहीं देखेंगे, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम ऐसा रिस्क लेके हम ट्राई कर लेंगे. If we do close strong about this FPG, we gonna have SL of 40 points and we can target into this $500. अंश ने लिख दिया है यूवी भाई. पूरे तुम कभी नहीं निकाल सकते यूवी, पूरे तुम कभी नहीं निकाल सकते. लाइव में शिफ्ट कर दोगे 5 पे आउट के बाद, फिर निकाल सकते हो. Alright, we are respecting that FPG, I guess. Can we get a short side play? No. ES, I do feel like ES gonna go into this. Okay, अगर ES में कोई रिस्क लेना चाहता है, there is a 13.1:1 ट्रेड. अगर तुम देख पाओ तो उधर लो तक, बट वही लग रहा है कि NQ लो तक पहुंच गया, उसने इन्वर्ट कर दिया कुछ पूरा. लाइव ट्रेड कर सकते हो. यस, क्योंकि यूवी फ्यूचर ट्रेडिंग ऐसे ही काम करती है, फ्यूचर प्रॉफिट ट्रेडिंग ऐसे ही काम करती है. नहीं निकाल सकते, तुम ऐसा समझो यूवी भाई, नहीं निकाल सकते मैंने बोल दिया मतलब नहीं निकाल सकते, उसके आगे कुछ नहीं, नो बैस उसके आगे. इट इज व्हाट इट इज, जस्ट थिंक अबाउट लाइक दैट. इट इज व्हाट इट इज. बाय ने बोल दिया नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, दैट्स इट. उसके आगे कुछ नहीं. यस, दैट्स अ प्लान, दैट्स हाउ वी डू इट एस ASR CEO. 2600 का बफर लाइट, you need to get to $2600. डबल कर लो एस क्रिएशन, 1586 का डबल कर लो, उसका आधा कर लो, तो सेम ही बनाना पड़ेगा नेक्स्ट दिन.
भाई मेरी एक टांग, मैं हॉकी का बड़ा खिलाड़ी हूँ। Nice, nice. No, if you are genuinely, I'm sorry for laughing, but if you are not, that's a good. If you are genuinely a good hockey player, I'm really sorry, whatever happened. But if you are not, yeah. Alright, guys. If it closes, we have a strong position to buy. 1 minute. मुझे पता है, बट जस्ट इन केस भाई लोग इसको क्लिप बना के डाल दे, है ना, इसीलिए मैं नहीं बोल रहा, जस्ट इन प्लेस। तो डेटा कैसे लो, अकाउंट से और परचेज करना पड़ेगा। और गाइस वी आर बाइंग हाफ ऑफ द क्वांटिटी साइज, ओके, एंड इफ इट डू कम बैक 37 पॉइंट्स का स्टॉप है, 37 पॉइंट 40 पॉइंट्स, वी नीड टू रियली पुश, ओके, दिस ट्रेड नीड्स टू रियली पुश, अदरवाइज वील हैव टू एवरेज इन 84। Because close is so bad, it can get up to this. I may or may not think to increase my SL till here, okay, floating SL रखो अभी तक, क्योंकि if there is it should not come back down in my opinion, but if it does, okay, we are taking 39 points, okay, 84, if it can just push or not fuck around. If somebody is baller enough, of course it can go into that, but I don't want that. I'm not baller enough. If it chops around, we're gonna get stopped out. If it doesn't, it can just go. It depends on ES, how ES reacts. I'm gonna 05 is stop loss, okay, 05 to 75, because I don't really want it to go back and then close, blah blah blah. If it invert this FPG, then there's shorts available on the markets, so I may better get out before it turns into the shorts market, okay. Just remember, we have gone with the half the quantity size of what we go usually. ES is closing strong to the short side, but again I still believe until or unless we invert this FPG, we are bullish. If we do invert that FPG, we are done. We need to close above this bearish candle, but again it's not pushing, it really not pushing. It did push for the while, but then it's just fucking us up. Hopefully we hold, we make this a low and then go up so we can trail. If it go above, take out this high, we're gonna trail our SL. बट वो जा नहीं रहा साला, ट्रेलिंग की बात करता हूँ तुरंत उसको नीचे आना होता है। ES इज बहुत हैवी है, ES बहुत हैवी है ऑन द अदर साइड। अगर ये थोड़ा सा बुलिशनेस दिखा दे, थोड़ा सा, काम हो जाएगा। शॉर्ट लुक्स गुड, मत बोलो यार, मेरी लाइफ लाइन अड़ी पड़ी है इस पे। Okay, if we invert that, I'm straight away gonna go shorts, okay. It's just about, if we invert this bullish FPG that we have, this one, I'm literally gonna go berserk on the shorts. Looks like it's not holding, by the way. Looks like our trading journey has come to the end. Please, Pete, I need this. My mom is kind of homeless. No, I have fixed SL. So if it does go below that, then I'm done. I have fixed SL of at 05, not giving more than that.
जो करना है इसको जल्दी करे, आइदर इन्वर्ट करे, प्राइस चॉप ना मारे जिससे हमें दूसरा ट्रेड एटलीस्ट मिल जाएगा। अगर ये प्राइस चॉप मारी है, वी नॉट गोना अगेन, हमें शॉर्ट्स नहीं मिलेंगे फिर, आइदर वे विल बी फक्ड। वी आर गिविंग व्हाट 39 पॉइंट स्टॉप, come on, stop us out or do something. All right, I got stopped out. If it does close, okay, if you are not a guy who risk or not, I would like to short this shit. We did push out, same thing as first trade, we did push out 21 points, but again it just, market doesn't have that balls to go up or down. I'm gonna wait, guys. It's not a close. We have been taking too many SLs recently. Market is fucking us up. I've seen that. ES का probably short बढ़िया था जो पहले से सोच के रखा था, but it's fine. NQ जैसे क्लोज करेगा, if you are taking one trade on funded account, taking a loss and closing the day, this is the day, just close it, it's fine. But I'm willing to go another one because I'm trading evals. Okay, you're gonna see a series on this, how I'm making to the payouts on 150k evals. I'm literally locked in, guys, right now. Wait for, if you are typing anything, wait for me. 336. Good morning, says. Level don't work. Different people, different mindsets, I guess. My level worked out pretty well. Made $51,000 this year. Again, I don't know about you, but my levels were pretty good. It did not work out today. It did not work out in past 3 streams. I don't know कौन मनुष्य देख कौन आ गया है, but again. वरना भाई तुम भाई, lots of people are like literally were here taking wins every day. It has been shitty since last 3 days. I'm good, I'm good, I'm good, I'm good, I'm good. हमारा काम है आओ स्ट्रीम पे, शॉर्ट्स लो, लॉस लो, सो जाओ. Okay, if it closes, I'm gonna go with again half the size, remember that. And then if it pumps back, I'm gonna average into it. Okay, chila. So that's a signal of short for me. So even if this gets my SL, I'm gonna give one full SL to the market, not two. Always remember the wording. And we are targeting little bit extra on this. We will go break even. Okay. But again, if this gets chopped up, if it's really choppy market, it is what it is. And it looks like it is, because as soon as we take a trade, it has to run into different. कौन बोला था नो न्यूज?
हेलो, कौन बोला था नो न्यूज? हेलो हेलो, अगर कोई 1:1 का फैन है याद रखना, इधर ही है, बट आई एम ऑन द इवाल, आई एम गोना गो। भाई इतना भाई कौन है जो स्ट्रीम पे आ गया है रिसेंटली? हर बार 20-25 पॉइंट, भाई इतना टारगेट कर दिया क्या? 20 पॉइंट हर बार देके चला जा रहा है वापस। बट वी स्टे स्ट्रॉन्ग गाइस, वी स्टे स्ट्रॉन्ग, वी गेट थ्रू दिस टुगेदर। ओके, ईएस अभी भी बेरिश है, होपिंग दैट एनक्यू स्टेज बेरिश, क्लोज स्ट्रॉन्ग, ये वीक्स ना बनाए जो बना रहा है अभी। आई एम गोना बी इन पेन इफ इट डज। ओ माय गॉड, but 3 back-to-back stream where we are ending on green. That is such a crazy thing to do for market. I'm just so sad. Alright guys, two losses. I'm gonna be done. It just don't know what is happening. It's such a choppy market recently, fucking me up. And once it stops me out, it has to go down, right? Right? I'm just so done with this market. और बताओ भाई, किसी ने प्रॉफिट लिया कि नहीं आज? मैंने एक फुल एसएल दे दिया, 40 पॉइंट्स फुल, 800 इंटू 2 मिनट, $1600 डाउन। I'm down like literally $1600 on my new evals. I'm gonna see if I can find good trades on evals because I do not care. शुक्र है मैं आज बाहर था, साले तू घर पे रहे। $1600 on one account, $1600 on one account. And if it stops me out and go down now, I'm gonna be pissed. Which levels are you? I'm trading ICT concepts, which are not working out probably. Unprofitable trader. Let's go. Negative RR is winning in this market, I guess. And there we go. It's a pure fucking chop every single day. After we get moves like this, if it chops around, probably not a good day. I'm sad cookie, guys. I'm sad cookie that things is not working out. ईवाल्स पास नहीं हो रहे, फंडेड्स पे नहीं आ रहा, फंडेड्स पे नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। बस वही 2 अकाउंट है जो पे आउट पे थे, उनको फ्लिप कर करके पे आउट ले रहा हूँ पिछले 2 वीक से। I don't know what is happening, guys. I don't know what is happening. I need to figure some shit out. पूजन हवन करवाने की जरूरत है। ईएस को देखो, वो पंप देके साला वापिस ये वीक आउट करके वापिस नीचे। That is just crazy. Thank you so much, Monty, for using code. रॉन्ग एसएल कैसे हो सकता है भाई? वही लगाता हूँ मैं स्विंग हाइस पे। I don't know.
वही लगाता हूँ मैं तो। कोड गेम। This fucking stupid NQ भाई, NQ is fucking stupid. If it did भाई, देखो तुम NQ ES में ट्रेड लेते हम, ये क्लोज पे भाई प्रॉपर बढ़िया ट्रेड था टू द डाउन साइड, उसने कभी भी ब्रेक इवन से ऊपर जाने के। एनक्यू को देखो, पूरा स्विंग हाई का स्टॉप दे रहा हो, उसको ऊपर जाके उसको भी स्वीप करना है। fucking piece of shit. And look at to the our target. I think मुझे I should really get some Maharaj here and do some puja. Otherwise, this is not gonna work out. This is fucking piece of shit. Shit or shit, whatever you call it. Nah, this is crazy. And ये अगर इधर से ऊपर चला जाता है टिल्ट नहीं आता, बट टिल्ट ऐसे दिन पे ही आता है गाइस। जस्ट रिमेंबर टिल्ट आर दिस काइंड ऑफ डेज वेयर यू बीन रीडिंग द मार्केट राइट ऑल थ्रू एंड थ्रू, बट क्या हो रहा है, तुम्हें स्टॉप आउट किया जा रहा है 2-3 दिन में, एंड दैट टू आफ्टर अ गुड रन। वी हैव हैड क्रेजी रन सिंस व्हाट January second half and February first half. It just past 3-4 days has been so frustrating for us, and especially NY session, right? Our draws are clear, everything is clear, just SLs are not working out. I don't know what to do, but I will figure it out as usual. Hopefully we'll get back on the winning streak again on the stream. And I don't know, stop blowing accounts on the evals, probably. This is crazy. Negative, no, I'm not going back to negative RR. It is for beginner. Anyways, bye, that's probably it. That's probably it. कल से सूट पहन के आना पड़ेगा, तो आई लुक लाइक वन ऑफ दोज गाइज, वन ऑफ देम, सो दे डोंट डू बैड टू मी. By proper trades, these are crazy by running 20-30 points in favor and then stopping me out. Or by 30 points, you just need those trades needs to go for another 10 points to go us break even. ये ट्रेड में ब्रेक इवन दे दिया, ये ट्रेड में स्टॉप लॉस लिया आधे, ऑफ कोर्स दिस इज लाइक आधे पोजीशन साइज से हमने एक ही ट्रेड, क्योंकि दोनों ट्रेड्स में अगर एंटर होने से पहले मैंने बोला था कि इट्स half the size, just because I knew this can happen. So we are taking it slow. Remember, we are taking it slow, going back on the winning streak, and as soon as we get on the winning streak, we're gonna again risk up. So we are down actually one trade, it looks like two, both from half position size, but it's all right guys. I'm gonna see अगेन, मैं ये बोलना नहीं रहा हूँ कि आई एम डन फॉर द डे। याद रखना, इवाल से मेरे पास बफर है, मैंने $40,000-45,000 का पे आउट ले चुका हूँ लूसिड से। आई कैन बर्न थ्रू सम इवाल्स। आई एम नॉट जस्ट इन विनलैंड, जहाँ पे मैं तुम्हें बताऊंगा $750,000 प्लस प्रॉफिट में हूँ मैं, एंड मैं कुछ ब्लो नहीं कर रहा, ब्ला ब्ला ब्ला। याद रखना, बिकॉज आई वॉन्ट टू स्पीड अप थिंग्स अप, because I want to get done with Lucid overall. Just because Lucid max out हो जाए, live shift हो जाए, I'm done. Then I'm gonna move to another firm. That's what I do. So I may be spending some money here and there, but we're gonna get through $100,000 soon. We have crossed $50,000. इधर अपडेट करना बाकी रह गया है नीचे. And yeah, look at this shit going through now. What happened in live account? Live account में डेली पे आउट्स मिलते हैं. गाइस वो लिंक मैं पोस्ट कर दूं क्या? किसको किसको चाहिए, जो जिसको कुछ पता नहीं है और गाइडेंस चाहिए, दे आर रेडी टू मूव इनटू फ्यूचर्स ट्रेडिंग. मैं 5 मिनट के लिए स्टोरी लगा रहा हूँ. ओके, जिसको साइन अप करना है वो कर लेना. कल तुम्हें कल की डेट्स बुक करना है, रिमेम्बर.
टिडी 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 टिडी। कोई तो साला हमें लूज करने के लिए देखने आता है। मैं प्रूव नहीं कर सकता, बट कोई तो आता है। But it's fine, guys. I've been into this situation and we're gonna get through it. Through and through. Don't worry, guys. You are with Gamecraft. इंस्टाग्राम पे लिंक पोस्ट कर दिए गाइस, जाओ जाओ। जिसको शिफ्ट करने में अगर किसी को कुछ नहीं पता एंड दे आर रेडी टू शिफ्ट इनटू फ्यूचर अकाउंट्स, रेडी टू स्टार्ट ट्रेडिंग, दे कैन बुक। वही चीज है, टूटी टांग वाला हॉकी प्लेयर, वही चीज है। ओ माय गॉड, दिस पीस ऑफ शिट। करना पड़ेगा, कुछ तो करना होगा। लिंक नॉट वर्किंग, व्हाट द फक। कर रही है भाई, कर रही है। कल की डेट्स बुक करना गाइस, ओके? 24 तारीख की। और ट्रेडिंग वाला टाइम बुक मत करना, बोल रहा हूँ। ट्रेडिंग वाला टाइम बुक मत करना, 7 बजे से पहले की बुक करना, उसमें ही कॉल आएगा, ओके? लिंक ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इज। और इंस्टाग्राम पे मैं डिलीट मार रहा हूँ, इधर डाल रहा हूँ। चलो, डिलीट डिलीट। देखो ये लिंक पे जाओ, बुक करो। और सभी मत करना जिसको पता है क्या करना है, डालो, क्योंकि मेरे से बात नहीं होने वाली तुम्हारी। टूडेज लाइव स्ट्रीम बोथ trades SL. Why don't you trade YM? Because I've never traded that. वो मैं सुबह ही कर लेता हूँ। ये हाउ डू यू हिट $150 मैं सुबह ही कर लेता हूँ। एंड आई नीड टू हिट $150K इन द अकाउंट्स वेयर आई हैव बफर ऑफ $20,000। तुम समझो, उसके लिए मैं 2-3 मिनट डाल देता हूँ और 4-5 पॉइंट में काम हो जाता है। वही चीज है। एक में ही करो यूवी भाई, एक में ही करो, हमें एक में ही करो, स्पैम मत करो, दूसरे को बुक करने दो, क्योंकि स्लॉट्स लिमिटेड हो गए कल के। वही चीज है, ओके? एक मिनट देना मुझे, ओके? All right guys, I'm back. किसने किस भाई स्पैम कर दिया तुम लोगों ने, स्पैम कर दिया लाड लो, स्पैम कर दिया। सच में इतने सारे लोग हैं क्या शिफ्ट होने वाले? वो आपको भेज देंगे, अगर तुम्हारा कुछ नहीं होता एटलीस्ट आपके नंबर पे कॉल आ जाएगा इन दी एंड। ट्रेड होगा कि नहीं मैं ढूंढ रहा हूँ यूएल्स पे, तो मैं ढूंढ रहा हूँ। प्राइस नहीं है, कुछ पैसा नहीं देने का, कुछ पैसा नहीं देने का। और
ऑलराइट। अरे वो तुम अगर शिफ्ट करने के लिए रेडी नहीं हो तो कॉल मत बुक करो, वही बोल रहा हूँ, स्ट्रेट अवे बोल रहा हूँ। ये क्या बोल रहे हो आप? व्हाट इफ 2-3 मिनट्स रिवर्स ऑन यू इट कैन कॉज। आप किसको बोल रहे हो? मेरा 150 के अकाउंट है तो मुझे कुछ, और मैं हार्ड ऐसा लगता हूँ भाई। लूसिड पे पे आउट अप्रूव हो गया बट अभी तक बैंक में नहीं आया, अकाउंट उड़ा दिया। पे आउट आएगा कि नहीं? आ जाएगा, आ जाएगा। अगर पे आउट अप्रूव हो चुका है तो आ जाएगा। यस भाई। आपने वर्क मार्केट बना दिया अकाउंट? वर्क मार्केट का अकाउंट बना दिया, उसमें आ गए थे? उसका वीडियोस आ जाएगा विलास भाई। आई बीन बिजी। ओ माय गॉड, यस इज बेरिश ऑल डे थ्रू। I'm gonna try bringing back my eval, okay, into the profit. I'm gonna do some degen shit. See, मेरा प्लान है कि तीन तीन के तीन सेट में एक आधा पास करना है और उसमें फिर पे आउट तक पहुंचाना है 100%. Okay, after I get to the funded accounts, I need to get those accounts, at least 2 of them, to the payout. Okay, so my plan is I'm gonna bash 9 evals, investing what 9 evals, $300-200 पर अकाउंट। अभी तो 172 है। तो तुम गिन लो कितना होता है। 9 एवरेज 200 की प्राइस पड़ेगी मुझे सब में। आई एम गोना इन्वेस्ट $1800। ओके, $1800 से हम ट्राई करेंगे एटलीस्ट दो में पे आउट आ जाए। दो में पे आउट आ गए, आई एम गोना बी एट $6000। एक पे आउट आ गया, दो तीन पे आउट मैं ऐसे ही निकाल लेता हूँ। सो दैट्स हाउ आई थिंक अबाउट अकाउंट्स। आई डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक, दैट्स हाउ आई रियली ट्रेड। हाँ जी, बट वर्क मार्केट में नहीं आया। वर्क मार्केट में आ जाना चाहिए। एक आधे घंटे और घंटे में आ जाता है। अगर पहली बार साइन अप किया है तो टाइम लगेगा। आपने इनविटेशन सब एक्सेप्ट कर लिया था ना लूसिड का? वर्क मार्केट इज मिडल मैन इन लूसिड ट्रेडिंग विच सेंड्स यू मनी इन योर बैंक अकाउंट इन रुपीज। CD day guys, CD day. This short should have been our win. I was frustrated. Have you taken all payouts from trades you have taken? Not all. Maybe 30-40%. Because I only come live 2 hours. And market is open 24 hours. So you can think about that, how it works out. पहली बार किया था और कर संडे था तो हो जाएगा। यस भाई, टेंशन मत लो। नहीं हुआ देन उनको बोल देना। मार्केट इज टू चॉपी, टुक अ लॉस इन लंदन अगेन। मार्केट अगर बहुत सारे लोग प्रॉफिट ले रहे होंगे इस मार्केट में, हमारा काम नहीं चल रहा वैसे। डोंट यू स्मोक लाइक वेडिक ट्रेड्स? नो, आई डोंट लाइक टू स्मोक। आई डोंट हैव एनी हैबिट्स as per se. I'm not gonna say bad habit, but लूसिड में 5K अवेलेबल है? नो, 25K। 25K का अकाउंट $50 का पड़ रहा है गाइस। बेस्ट अकाउंट है फॉर बिगिनर, दोस आर द बेस्ट अकाउंट। हमारा धंधा मंदा है। इस प्रूफ ऑफ इट रिक्वायर्ड फॉर नहीं नहीं, इसीलिए ना वो INR में पैसे भेजते हैं तो कभी प्रूफ जरूरत नहीं पड़ती लूसिड में। मैंने साइन अप किया तो क्या होगा, कल आपको कॉल आ जाएगा रिगार्डिंग हाउ टू प्रोसीड इन द फ्यूचर इंडस्ट्री। ओके, तो दैट विल हैपन। अब आप क्वेश्चन पूछना बंद करो क्योंकि मैंने लिंक डालने से पहले आई सेड इट व्हाट्स गोना हैपन। You signed up and then asking for what's gonna happen. Well, by the way, did you guys read the tweet? X को मैं इधर कर देता हूँ क्योंकि X पे कुछ भी आता रहता है। Did you guys read the tweet that I posted? Did you guys read the tweet I posted? मिनी से ट्रेड नहीं, 25K में मिनी से मत ट्रेड करो। 25K में तुम ट्रेड करो
micro से. Okay, if you ask me in English, I will answer you in English. Okay, so this is what I tweeted, guys. Let me know if you know someone like this. Okay, if anybody of you know somebody like this, become profitable before selling anything. I have never ever sold anything before I became profitable. Why? Because again, that doesn't make sense. Not even a code, not even a mentorship. Okay, I became profitable in October, November of 2023. I started selling mentorship for 1 rupees, 1 rupees per month, just because I wanted to see if anybody pays even 1 rupee for my mentorship, right? Because again, most of people don't get paid for anything they do. So I just wanted to see if people pays for my mentorship or not. Okay. No fake guru face because I have never, no rented lifestyle. I have never flexed anything online other than the story I posted recently. जब तुम्हें खेत दिखे होगे whatever blah blah blah. That's the only flex I have. I don't have flashy cars. I don't have a big house or whatever. It's just me, myself, and my investments. Okay. No affiliation course until the real results were there. That is also true. Single-handedly shifted Indian crown from forex casino to future. I am the one why you are seeing future के जो रील्स देख रहे हो ऑनलाइन, कोई सा भी इन्फ्लुएंसर ले लो, किसी को कुछ भी नहीं पता था फ्यूचर्स के बारे में. I brought this thing here in the industry. If it's through Sahil, if it's through anybody else, I don't care. It's me who brought it. I was behind the door working. Okay, remember that. From everybody who is shifting to futures have always called me for the suggestions. If not me, call Sahil, and Sahil को suggestion मैं देता था. Just remember that. Okay, clear 200k in 2024. Was the first influencer to cross $200,000 payout. Okay, in a year, single year. Okay. Again, I'm not gonna read the 6 point. Chat GPT, thank you for making this. W. I dropped a course in 2025. Not course, mentorship. रिफंडेबल 100% रिफंडेबल मेंटरशिप, जहाँ पे तुमको 50,000 पे करने होते थे, 2 महीने तक ट्रेड करना था. इफ यू डोंट गेट द पे आउट, आई गिव यू द रिफंड बैक. I have trained 300 traders. They all took payout with me. Only I had to refund 3 times because it's always students' mistake. And there was never a case where it was my mistake. It's always students. Because what I taught has always been working out. My students are making shitload of money, blah, 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 blah. Whatever, right? 1.3 million in payouts generated by students, not mine. In 2025, till January of 2026, the number was 1.3 million. 1.3 million in payouts. So again, if anybody is saying shit out there, your mentor has got the upper hand. Just remember that. Just remember that. Your mentor has got the upper hand. I got receipts to show. If anybody is out there telling me I faked everything. I have always been posting online about everything. I just go with the market A77973. If it's going down, I'm just gonna go enter with 2-3 minutes and get it done with. It's very risky to do things if you have only one account, but I have multiple accounts which I don't care of, which I have huge buffer with, so it's fine. No, I'm not talking about morning night star. Again, not talking about anything. If it's come down to trading 1-to-1, nobody fucking in the industry can even come close. Remember that. If you want to learn future and how to start future, I did posted a link about, just book your call. You will get a call soon on how to start. Okay, I have pinned the. Yes, I'm gonna milk the firms till I go live and then see what I can do. Please open the mentorship again. Mentorship gonna cost you a lot, guys. Just remember, just make little bit effort and learn from live stream. I would really appreciate that. If I do open mentorship, it's gonna be costly, guys. If I am giving a 1-to-1
or at least 10 people attention, it's going to be very costly. Just know that. New funded accounts. So if honestly me myself, if I do get the new funded accounts, I have zero expectation from funded accounts. That's what that's how I like to see my funded accounts. And what I do is like in the first or second day, I try to risk at least as per parameters. Let's say if it's 50K account, I'm gonna risk $500 to $600 on a trade, and if I win on that trade, I'm gonna risk. If I do find another trade, I'm gonna risk the same amount on the same day to build that heavy buffer on the same day. Because if I win $500 today, $500 trade today, I'm gonna have $2,500 DD in the next trade, going into next trade. So I'm gonna use that 500 extra today to make another buffer, because again, money is not yours until it gets into your bank account. So that's what I do, make $1,200 and then slowly build my account in 1-2 days till $2,000, and then flip my days, take payout. After I take one payout, I try to go another for $1,200, $300 trade, and if I do get it, then that account is secure. It's gonna get to third payout, fourth payout, fifth payout, sixth payout, just like that. लूसिड तुम 2 दिन में पास कर सकते हो, और इफ इट्स प्रो अकाउंट यू कैन पास इट इन 1 डे. फ्लिप में कोई स्ट्रेटेजी नहीं है मेरे पास, मैं फ्लिप रैंडमली कर देता हूँ तीनों. हाउ कैन आई डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम? अरे दिनो भाई, मैं बता रहा हूँ 3 दिन से तो भाई बाहर ही हूँ मैं, 3-4 दिन से. वो आ जाएगी. बी little bit patience on that. I know my promise is having fake around posting videos, but soon it will be posted. Please believe me, it will be posted. I'm really sorry. What if I got what if it got breach? It's fine if you did breach 50% consistency rule. You don't lose the account. It's just you have to make little bit extra. There is no time limit to pass Lucid account. There is no time limit. It's unlimited. Go for it. न्यू ट्रेड की प्लेटफॉर्म में ट्राई एंड टेस्ट आउट करके बताऊंगा. अभी मुझे नहीं पता है वो कैसा है. वीडियोस बहुत सारी लाइन अप है, स्ट्रेटेजी वाली, लूसिड वाली तो चलो आगे, बट उनके रूल्स, ट्रेडिफाई के रूल्स, टॉप 2 फर्म्स के जो अभी मुझे लग रहा है दोनों की वीडियोस आने वाली है, एंड रिस्क मैनेजमेंट. तो 3 डिफरेंट वीडियो आने वाले हैं. तारीख पे अगर आप मेरी पोजीशन में होते हैं ना, तो आज लाइव आना भी नहीं बनता था भाई, इतना बिजी हूं मैं. It's still a great thing, Anmol Gaming. If I see, I don't like to sugarcoat anything, Anmol. You gonna go blow some accounts. I blew what, more than 60-65 evals before I took my first payout. Just remember that you're gonna go through that phase. Even after buying 5 accounts, you pass 2 of them. That is still a great ratio. You need to focus on getting that 2 number to 3. 3 में से 5 में से 3 पास करो, 3 में से 1 को पे आउट को पहुंचाओ. ओके, जस्ट फॉलो योर रूल्स. इफ यू ब्लो, जस्ट रिस्क तो करना ही है. जो मैं बताता हूँ, दैट्स अ बेस्ट वे टू ट्रेड.
You're gonna blow some evals, it's fine, but you're gonna get to the payout. Just remember, if you do things very nicely and cleanly, neatly, you're gonna get to the payout. Just remember, every time you blow account, just learn from it. That's the only thing. अंकित, you're welcome. बस बढ़िया बढ़िया भाई. हर रोज लाइव आता हूँ मैं, लॉस लेता हूँ और फिर सो जाता हूँ. डब्ल्यू ट्रेडिंग. हाँ, डब्ल्यू ट्रेडिंग अन्ना, डब्ल्यू ट्रेडिंग. तो ऑलवेज थिंक अगेन. लोग क्या बोलेंगे, वो रियल ट्रेडिंग नहीं है, ये तो रियल ट्रेडिंग नहीं है, तो भाई मैथ्स की बात कर रहा है. हाँ हाँ, ये तो ट्रेडिंग ही नहीं है, ऐसे थोड़ी होती है. बट सालों हम ट्रेडिंग, हम पैसे कमाने आए हैं, याद रखो. ट्रेडिंग ऑफकोर्स सीखनी है, उसके वजह से ही पे आउट आएंगे. बट ऑलवेज रिमेम्बर, तुम्हारा पॉकेट डीप नहीं जाना चाहिए. योर पॉकेट्स हैव टू बी डीप ऑल द टाइम. सो इफ समथिंग हैपेंस इन योर लाइफ, you are ready to pay for it, or maybe you are not in net negative. पे आउट आना चाहिए. चिका मैंने जो पे आउट, तुम देखोगे मैं कितना भी खराब ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मेरा पे आउट आ जाता है. क्यों? क्योंकि मुझे गेम खेलना आता है. गेम कैसे? अच्छी सी ट्रेडिंग भी अच्छी करता हूँ मैं, थोड़ी बहुत तो कर लेता हूँ, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं आती मुझे, थोड़ी बहुत मैं ट्रेडिंग कर लेता हूँ. प्लस मुझे प्रॉब्लम्स की गेम पसंद है, और कैसे खेलता हूँ वो मुझे पता है. अगर ये क्लोज करता है, दिस शॉर्ट्स इज प्रॉपरली, आई एम गोना शॉर्ट ऑन माय इवल्स. आधे आधे से मैं एवरेज इन करके कुछ ना कुछ करके, तो साला आज देखता हूँ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. मजा नहीं आ रहा मुझे ऐसे बैठ के. अरे मेरे कोड से मैजिकली प्रॉफिट्स तो नहीं होगा, बट थैंक यू फॉर यूजिंग माय कोड. जैस्मिन, ओ जैमिन भाई, व्हाट्सअप. माय फर्स्ट एवर 5 बैच, 5 में से एक बंदा था. ES doing it a lot better. Yes, ES is not chopping a lot. If you see NQ just fucking chopped us. मैं ये नहीं बोल रहा तुम गेम कोड यूज करोगे तुम्हारा पे आउट आ जाएगा, बट ऑफ कोर्स if I'm coming live giving you free knowledge, you know what to do. I used to charge for this shit, guys. I used to charge for this shit. I know you don't feel it's worthwhile, but yes, I used to charge for this shit. And people used to take payout. I don't think so 100K away obviously, but he did make good amount of money. Yeah, that's what I'm saying. सेम भाई, ये समझ लो, तुम अकाउंट, तुम आओ इस माइंडसेट से दैट यू गोना ब्लो सम अकाउंट्स. अगर तुम्हारे पास सेविंग नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू ओवरऑल, ओके, ओवरऑल सबको बोल रहा हूँ कि तुम ये समझ के आ जाओ कि 5-10 ईवाल तो ब्लो हो गए. अगर तुम्हारे पास फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं है जो तुम इतने ईवाल ब्लो कर सकते हो, मत अभी मत आओ. सेविंग कर लो अच्छे से, अपने आप को सिक्योर कर लो, फिर ही आओ. ओके, 5-10 ईवाल लेके आओ, उसका बफर लिया, फिर जो तुम देखोगे अपनी ट्रेडिंग में शिफ्टिंग, और अच्छे से जो तुम ट्रेड करोगे, रिस्क करोगे, देन यू गोना सी क्रेजी शिट हैपन. That why it is important to coming with that kind of buffer, because it is always good that maybe your week can be wrong. Okay, week is bad, that's why you are losing little bit, blah 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 blah. But overall, if you are learning, if you are improving yourself, it is
प्रॉप फर्म बहुत ईजी है, आधा रिस्क तो प्रॉप फर्म उठा रही है, राइट। आधा रिस्क तुमको 50% रिस्क उठाना है, उसमें भी 50% है कि तुम बाय और सेल के 50-50 होने वाला है यार। तो वो जो इधर का जो होता है ना, उसके लिए कोई प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता इंडस्ट्री में। लोग क्योंकि अपना दिमाग चलाते हैं, जो लोग टेस्टेड आउट करके रखे उनका कुछ यूज नहीं करते। Please tell your views. GC I have stored that from 50 to 100 SL 25. गोल्ड में क्या, गोल्ड में समीर भाई क्या यार, गोल्ड में तुम मुझे, मैं तुम्हारे से भी नूब हूँ गोल्ड में। 180 तक, ओ माय गॉड भाई, उतना तो मेरे बाप दादा ने कभी नहीं लिया। वो वीडियो भी आ जाएगी, वो वीडियो भी। मैं बिगिनर को बोल रहा हूँ ना कि अगर तुम्हें सिर्फ प्लेटफॉर्म, एक अकाउंट को तुम्हें प्लेटफॉर्म सीखने में चला जाएगा, एक अकाउंट में प्लेटफॉर्म सीखने में, रूल समझने में, वो सब तक। अब तुम देखोगे वीडियो देखते रहोगे, भाई प्लेटफॉर्म में ऐसे ही सीख लूंगा बिना 5,000 रुपये वेस्ट करे, ब्ला ब्ला, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। तुम गलती करोगे तभी सीखोगे, एंड दैट्स द ओनली वे टू लर्न, जस्ट रिमेंबर दैट। Okay, that sort did work out. I did sorted in this week. Let's see if I can. And that is अगर किसी को लग रहा है मैं गलत बोल रहा हूँ, तुम अपने आप 6-7 महीने ट्रेडिंग कर लो, अगर तुम्हें मेरी बात याद नहीं आई मुझे बताना। And nobody has ever lost listening to my advice. You just gotta catch it, you just gotta work towards it. You cannot just come in front of charts 2 hours and then be done. You gotta work really for it, because I did my work in 2022 2023. I put hours and hours into this shit. That's why I'm here in front of you, or maybe making this kind of money, right? I work towards this at, like, for these kind of moments. तो जस्ट रिमेम्बर, इट्स नॉट गना कम टू दैट इज इट। सो तुम एक अकाउंट उठ जाता है, फिर अकाउंट उठ गया। अगर तुम्हारी ऐसी फाइनेंशियल सिचुएशन है, देन जस्ट टेक इट इजी। हेलो मेटा एक्टिविटी, वेलकम टू द स्ट्रीम। व्हाट इज योर फायर, व्हाट्स दैट? One is to one is okay. If you feel like 1:1 is for you, 1:1 is okay. I'm again gonna scale in into shorts, guys. Okay, remember that. And these are not, again, these are the trades where I'm gonna just try to bring my account back. It's like I see, ये ट्रेड कैसे होते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ कि let's say my bias is to the another long. Let's say if my bias market is bearish heavy short, okay, my bias is to the short, and these are the trades I only take in the EVAs. Remember, this is another strategy, just pay attention. So this is my bias, okay. I feel like ES is very bearish and I want also NQ to follow through and get to this, okay. So what I'm gonna do is like put very small quantity on NQ short here. If I do short here, if it goes against me, I'm just gonna average in. I'm gonna keep my SL floating in my mind that I only need to give $1,000 to this trade. If it goes beyond that, I'm gonna cut the trade and rethink the position. And this is only about eval. Just remember that you cannot do this shit everywhere. And if it, again, if you are somebody who is like has very less buffer in terms of buying purchasing accounts, it's gonna be very hard to do this stuff. I'm just being transparent because not lots of you think that you're gonna make shitload of money. People like us who makes it like or $100,000, $200,000 in a year.
You remember that doesn't come from 2 accounts or 3 accounts or 5 accounts. और एक बार हमने परचेस कर लिया और वो सारे हम चलाते जाते हैं ईयर एंड तक, और वो पैसे हम उसी अकाउंट से बना रहे हैं. What we do is like go through a cycle of accounts. We pass accounts, we take payouts, we blow those, we do the same thing. So again, last year if you see, I made $215,000, but I also spent $65,000 on that. So just remember that, you know that. Okay, don't put unrealistic numbers in front of it. My suggestion is go for $1,000 per month first, $2,000 per month, build that buffer to spend on the props, and then go to where we are. Like, I mean, take the suggestions again right now very seriously. Otherwise, you're gonna, if you look at my numbers and you try to replicate those numbers with your pockets, which are very shallow right now, I'm not saying, I don't know which background you come from, but it's gonna hurt you. बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट मैं नहीं मानता बैक टेस्टिंग में, बट अगर तुम्हें लग रहा है कि बैक टेस्टिंग तुम्हें हेल्प करेगी तो बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट करो, जो भी करना है करो, बट मेक श्योर यू आर डूइंग राइट थिंग. Credit card, debit card, here and there, same thing. It's about consultancy. If you need if you don't know what to do in future firms and you are ready to move into the future firm, there is a pin link. You can book a call. Make sure you are ready to move and you know answer properly. Otherwise, your call will get disconnected anyway. And I'm not here to show you my trading or show you what I do. I'm just here to be how that. I think I did not stream last year, so you don't know how I did. I get to the $215,000 like out of nowhere. This year you have seen me progress through because I've been streaming. I've been streaming through January to, I guess, even in December I streamed. So you have seen me making $45,000. Of course, everything was not made on stream, but you have seen the progress. How did I make this progress? Can you help me how to trade in gold? You just search GC. GCH क्या है? Gold का GC something. Can somebody drop the GC ticker? $65,000. Holy, but again I made $215,000. So I'm still in profit about $150,000. Holy fuck, that as well. Right? MGC6 देख लो तुम, टिकर देख लो. Yeah. Again, I did not put $65,000 from my pocket because I was also in profit from last year. एंड ऐसा नहीं कि मैंने पहले $65,000 डाले और फिर मैंने इतने पैसे बनाए. इट्स ऑलवेज पे आउट बनाए, थोड़े अकाउंट ब्लो हुए, पे आउट बनाए, थोड़े अकाउंट ब्लो हुए, पे आउट बनाए. सो अगेन यू कैन स्टार्ट विथ व्हाट $2-3-4,000 एंड दैट्स व्हाट आई डिड स्टार्ट विथ. अगर तुम देखो जनवरी में, दिसंबर के लास्ट वीक में मैंने 5 अकाउंट पास किए थे लूसिड के, और उसके ही थ्रू मैंने बहुत सारे पे आउट लिए हैं. So again, if you see that I started with $2-3,000, if you look at that way, of course I spend from my profits, but that's how it works. All right, Alpha. All right, पाजो देख लूंगा. Yes, true, Silent. ओके अर्जिल कही दे सुन. अगर कुछ सीखा है कोई मॉडल या कुछ, बस देखते लाइट देखना उसको 6 months so more. If I want to see changes, again you need to trade that model for long enough to see if it works out for you and not. Jamin, man DM कर, I mean DM me on Insta. Sorry, on Discord. You have my Discord, right? I will tell you in DM.
Wow, it's going slowly melting down. Bringing back my account. See what I can do. Oh, you have number. Okay, you have my number. Okay, okay, okay. DM me there also. और call कर देना stream के just बाद. Alright, guys. See, as I said, that if I have a bias and if both indices are to the short side, what happens in a proper trade is that it's gonna get me out weak pair. So what I do is like enter on the week alone. So see if it's melting on the evals, I'm gonna make shit load of money, and that is through like heavy position sizing. Slowly build करता हूँ अपनी position sizing. Alright, जमीन भाई. फोर्थ पे आके थर्ड पे मुझे कॉल कर देना. Okay. हाँ ऑफिस में हूँ मैं. आ जाओ. I've been trying to pass evals and get funded for like 2+ years. Aryan, you are making mistakes which maybe you're not improving. Maybe वो जो लिंक पोस्ट की थी उसमें कॉल मैं बता दूंगा आर्यन भाई. अगर आप इफ यू आर ऑन द स्ट्रीम मेक श्योर. अगेन आर्यन भाई आपको मैं कैसे हेल्प करूँ. 2 years and not passing evals is crazy. I need to help you. ऐसे करें गाइस, कल दोपहर में एक स्ट्रीम रखें. एवरीबॉडी हु वांट्स टू हेल्प, कल दोपहर में एक स्ट्रीम रखें. उसमें हम वेरी डीपली गोना टॉक अबाउट हाउ if you are not improving at all, we gonna talk through. Okay. डिस्कॉर्ड पे रखते हैं. डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो. डिस्कॉर्ड लिंक मैं पोस्ट कर देता हूँ. ओके. एक्सप्लेनेशन माय डिस्कॉर्ड एज वेल, एंड डिस्कॉर्ड की लिंक भी मैंने अभी पोस्ट कर दी है. और ज्वाइन कर लो गाइस. कल दोपहर में मैं अनाउंस कर दूंगा कितने बजे कॉल है. ओके. अगर कल नहीं आया तो हम लेटर ऑन कर देंगे. हाउ मच परसेंटेज डू यू परसेंटेज वाइज नहीं, मैं तो बोलता हूँ $400-500 और 50K इफ यू आर इन अ बफर. अगर डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना गाइस. Just around after 1 or 2 o'clock when I'm well be I mean ऑफिस में मैं आ जाऊंगा सुबह उठ के, तब करेंगे. तो 2 बजे से 4 बजे के बीच में अप्रोक्स टाइम. ओके. स्ट्रीम नहीं, डिस्कॉर्ड कॉल ही रखते हैं कि सब लोग आ जाना जो कोई गेम यूज करते हैं. वही आना जो कोड यूज करते हैं. जस्ट किडिंग. डिस्कॉर्ड लिंक भाई 50 बार यू ही पोस्ट हुई है चैट में. देख ले एक बार. यू भाई आप दिक्कत कर रहे हो मुझे. एक तो ये मार्केट दिक्कत कर रहा है मुझे, और एक आप हो. दोनों दिक्कत किए जा रहे हैं. डेमो भी यूज किया है, चलेगा. अरे चलेगा, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ. आ जा आ जा. व्हाट ऑफिस. $10,000 भाई कम बोल दिया. नेक्स्ट भाई पूरे अहमदाबाद को कवर करती है वो. इज इट अ ट्रेडिंग फ्लोर? ना, इट्स नॉट ट्रेडिंग फ्लोर. इट्स माय पर्सनल थिंग. जो एक बंदे ने बोला था, गैस किया था फर्स्ट, इट वाज राइट. Come on. Okay, nice. That was sweet and juicy. And I need it to get to like 01.
ऑफिस पर बकचोदी, बारे बन जाने दो पूरी तब। घर से निकाल दिया भाई, घर में मैं चिल्लाता था ना मेगा मनी मंडे में, तो घर से निकाल दिया मुझे, तो मुझे ये लेनी पड़ी। समझ रहे हो तुम? भाई ऑफिस ले ली, पर ट्रेडिंग कब ठीक होगी? भाई ऑफिस ले ली, पर ट्रेडिंग कब ठीक होगी? जो कंसल्टेंसी जो हैंडल कर रहे हैं वो बंदे भी है इधर। कि मैं भी फेक कर रहा हूँ जस्टिन की तरह। भाई रियली में 2 साल पहले मैंने एक बंदा था जो मेरे डिस्कॉर्ड में, ही वाज मॉड। इफ सम पीपल नोज हियर दे गोना exactly go to that guy if people are very old। फिर रिमेम्बर कि मुझे सब पता था ये जस्टिन बस्टिन, वो अच्छी सी लाइट बाइट, वो क्या बोलते हैं, अच्छी लाइट सेटिंग्स और हाई क्वालिटी वीडियोस बनाते हैं, तो तुम लोग भाई मान ही जाओगे, है ना? ये रहा, ये रहा, जय को पता होगा, कभी को पता होगा। ये आ गए ना बंदे निकल के अंदर से, गुफा में से। अरे बाविस भाई क्रेजी यार, बाविस भाई को भी पता है। सो तब मैं बोलता था भाई इन लोगों को फॉलो करने लायक नहीं है चीज। लो निकल गया बॉयज, अब वो स्टोरी पे वापस आता हूँ थोड़ी देर में। लो निकल गया बॉयज, साला तुमको ट्रेड देता हूँ ना तभी लॉस होता है, तुमको ट्रेड देता हूँ ना तभी लॉस होता है मेरा। ऑलराइट 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 ऑलराइट। जय जय नहीं था, जय की बात नहीं कर रहा मैं, दूसरा वाला बंदा, यूट्यूब चैनल है अभी उसके। ऑलराइट सो आ जाओ, क्या बात कर रही थी? साले तू, साले तुम कॉपी करते हो ना मेरा, साले तुम कॉपी करते हो ना, इसलिए मेरा लॉस होता है। और मैंने इधर से बोल के रखा था कि मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। स्ट्रीम में वापिस जाओ, जो समझदार है, समझदार को इशारा काफी है। स्ट्रीम में वापिस जाओ, देखो मैंने नहीं बोला होता तो। देखो मिस्टर एक्स भैया देखो वो टीपी ले रहे हैं। ओके कमिंग बैक टू द टॉक। ओके मैंने बोला था भाई मैं भी अच्छी वीडियो, ओके लेट मी रिलैक्स। ओके हाँ तो भाई अच्छी एस्थेटिक सी बैकग्राउंड लगा दूं मैं, अच्छी एस्थेटिक सी लाइट्स लगा दूं, उसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ। प्रॉफिट्स के प्रूफ्स कौन मांगेगा? तुम कभी भी किसी भी इन्फ्लुएंसर के पास जाओ, ऑलवेज रिमेम्बर टू आस्क फॉर द रिसिप्ट्स, रिसिप्ट मीनिंग प्रॉफिट्स प्रूफ्स ऑलवेज। तुम देख सकते हो मेरे सारे पे आउट जिसे भी दिन मैंने पोस्ट किए डिस्कॉर्ड की चैट में, सॉरी लूसीड के डिस्कॉर्ड की चैट में जाओ, वहां पे सर्टिफिकेट पोस्ट किए हुए हैं। गो वॉच आउट एंड देयर विल, क्योंकि वो तो मेरे हाथ में नहीं है ना? तुम फीडियास के उसमें एक्सप्लेनेशन मार्क डिस्कॉर्ड फॉर डिस्कॉर्ड लिंक, तुम यू गो टू फीडियास वेबसाइट जहां पे मैंने पोस्टेड $20,000 पे आउट, उन्होंने पोस्ट किया है $20,000 पे आउट। ओके रिमेंबर every firm that I have traded with, I've never shown a fake payout, never ever. Okay, remember that. Expense, you guys know at the end of the year, every year that I post expense ratio and whatever blah blah. In between, maybe I have forgotten something. So, in the end of the year, I always do the math on how much I spend or whatnot. So, I saw that guy posting aesthetic videos here and there without showing any receipts.
Of course, if I'm taking payout, why would I not show it online? मैं हर रोज आके तुम्हारे पे सबसे पहला फ्लैक्स क्या करता हूँ? Payout, if I also need to I also need to again, if I'm making to the payout, of course I'm gonna flex it on you. How to check payout certificate is real? So if it's a Lucid payout, go into that Discord. Lucid firm की Discord पे जाओ, वहाँ पे you will find the Lucid certificates. If it's a Tradeify, I don't think so. There is a okay Tradeify के there is a certificate section in Tradeify as well. If it's Apex, go to Apex website payout section, वहाँ पे नाम आ जाएगा. So there are lots of way to identify fake things. Okay, so these guys faked $750,000, or he posted himself that okay, I have done scam, blah 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 for 3 years. He scammed people for $4,000 per month mentorship. $4,000 per month or some kind of whatever. $4,000 charging people. Not shit. I mean, he has 250,000 audience, whatever, blah blah blah. I don't know if this is true or not, whatever he posted, but let's take this as an example. Okay, if it's not true, he comes out tomorrow and say this all was fake. Look, this is how much. ये attention के लिए भी ये हो सकता है पूरा scene, right? I'm not saying this cannot be a prank, but ऐसा ही होता है. अगर इसके केस में नहीं, if it's not in his case, every other case, it's gonna be like this. Always remember where that guy is coming from. What was his background? Did he spend more money before? It's like, always remember that. Was he influencer first or trader first? Just remember that. I've been a trader since 2022, 2023, and I become influencer coming to live or posting Instagram reels recently, flexing my payouts online too much recently, right? So always remember that. Did you see my code anywhere till 2025 December? No. After I saw that, of course, I can provide through the mentorship. I proved myself a lot that okay, I can make people profitable. Then I come to the live. I started coming YouTube live, whatever, blah 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 blah, whatever. Right? Then I came out with my own affiliation course. Right? So if you see a guy with aesthetic thing, good camera than me, a good lighting than me, a good mic than me, whatever, blah blah blah. Remember, and he's not showing any certificates or payouts. Just posting, guys, I reached $200 for $500, blah blah blah. समझ जाओ, कट जाएगा तुम्हारा, कट नहीं वाला है, और कट रहा है तुम्हारा. Always ask for receipts. I would say if somebody is coming online with their stuff, they at least need to be profitable. They at least have to be, I mean, they must have taken out $50,000 in profits, blah, blah, blah. They have to be a big guy. They have to understand proper math of profits, blah, blah, blah. Right? कोई एरा गहरा एक पे आउट लेके इन्फ्लुएंसर बन रहा है आजकल. क्या करोगे तुम? बात जस्टिन की कर रहा हूँ, जो उसने वीडियो पोस्ट की थी और डिलीट मार दी. समझ रहे हो ना? और उसने डिलीट भी मार दी, पता नहीं क्यों. इट कैन बी फॉर अटेंशन. डू यू स्टिल डू मेंटरशिप? नो. अरे नाम तो बता दिया जस्टिन का. नहीं, वो बंदे का नहीं. तो मैं बोलता था कि भाई दिस इज ऑल फेक टू दैट गाय हु वाज वाचिंग हिम, फॉलोइंग हिम, व्हाइल he had access to me. He had access to me in 2024, guys. Still chose to follow that fucker, that scammer. I let it be. See, I'm an egoistic guy. I take everything on the ego. So I'm not gonna say anything right now. But yeah, you fucked yourself, motherfucker. You have zero payouts and lots of affiliation because of you did not follow what I said. What's up, Danny? Sir, still Tradeify is the best. Tradeify is always gonna be best for me. I'm gonna buy accounts with Tradeify only, and maybe a new platform. But yeah. So remember, if I say something,
इट या हु इज जस्टिन, अगर तुम बहुत नए फ्यूचर इंडस्ट्री में, तो तुमको जानने की जरूरत, यू डोंट नीड टू जस्टिन वर्लिन, या दैट गाय, you don't need to know everything, you don't need to get into the drama, but yeah, remember that good lightings doesn't mean big payouts, or good videos doesn't mean big payouts. It is this kind of knowledge that I'm giving you online, trading online, taking losses in front of you since last 3 days, and being cool about it, and not going shutting down my stream, not reading your comments. Either I take wins or losses, you have seen me doing that through and through. Okay, you know that. While we were on a hot run, while we are on a losing streak since 3 4 days, we will get through that. This is the real trading. I'm telling you. I see. I do not care about anything. Anybody who is here, I do not care. If I see my friends scamming, I'm gonna call them out, and you will see some of that names coming out very soon. I cannot see people lying through their teeth online just because of the affiliation or anything, mentorship fees. I always build things on the trust. GameCraft name has always been stood on the trust, and it will always will be. Okay, you'll never see. Even if I'm scamming, they have to pay me what $1 million, और वो पैसे लेके हम बांट देंगे साथ में. And that's the only way I can scam if I am scamming. धीरे से तुमको बता दूंगा कि ये स्कैम है, मत लेना. हम पैसे लेके फिर बांट दूंगा मैं आधे आधे. But I'm disturbed from last 1 month. Give suggestion to get back on track. Take a deep breath, release it, review your strategy. और अगर वीकेंड में नहीं की तो अभी रिव्यू कर लो. टेक अ 2 days break, Monday, Tuesday. Review whatever you are doing. If you find any mistakes, if you do not find mistake, I guess you need to send me something in detail, then I will get back to you soon. But again, if you do find the mistakes, improve on that slowly. You're not gonna improve overnight. You will improve slowly, steadily, bit by bit by bit. Okay. If I took a first loss and walked out, it's been messy last week. 3 4 weeks has been lost. It's fine, Vivek. It happens. It happens. We take a chill pill. Again, I hope that you are winning 3 4 back to back losses और उसके पहले. I hope you took benefit of that. वही चीज है. अरे कोई मिल नहीं रहा ना प्रतीक, कोई मिल नहीं रहा ना साला $1 million दे. If I still want to learn from you, how do I learn from these guys? Learn from whatever I'm taking. I'm gonna teach you the same thing. It's been messy. It's been very messy. Look at this, guys. How we are melting from the point I said we're gonna melt. See again. याद रखो तुम स्ट्रीम पे 2 ट्रेड्स का रूल से आई एम गोना फॉलो थ्रू बिकॉज आई डू नॉट वांट यू गाइस टू फॉलो द सेम वे बिकॉज आई कैन स्पेंड लिटिल बिट मोर मनी इन द इवाल्स. अगर तुम कर सकते हो, you are very smart to do things. So when I go into the trade, I tell you guys that I'm gonna slowly scale into this, blah blah blah. But I do not put RR on that trade just because if somebody new coming joining in, they're gonna take trade directly. If it's on break-even or whatever point, they're gonna think that I took a winning trade. But no, I did not. I took 2 losses, and that's the truth about today. Okay, that's the real truth about today. Whatever happened after that was gambling. You can call it a gambling. It's fine. I gambled away my $600. Just say that. It's fine. It's fine, guys. I'm ready to accept that. But it's my money. I can do whatever the fuck I want. Right?
ओ माय गॉड, किसी को ब्रेक इवन निकाल के 1 ओके अभी जा रहा है। एंटी एंटी यार, एंटी समीर भाई, एंटी नाइस ट्रेड। यस मीटअप विल बी सून, बट मैं सारे लोग अकोमोडेट नहीं कर सकता गाइस अभी भी। What a drop, guys! What a drop! This trade, this pucker trade was absolute right, but look at how we have been stopped out. आपका चंद्र, आपका क्या मैसेज था? कहाँ गया आपका मैसेज? कहाँ गया? कहाँ गया? Trades. See, I'm starting to post reviews as well. What I did today, blah blah blah. More videos भी आएगा. Just after the stream, I'm gonna record what I did through and through whole day, because stream के बाद का आपको पता नहीं चलता. Then you will see everything will be coming out. I'm gonna be posting every shit. Okay, don't worry. It's never market neither, so it doesn't matter how many people are using that. It's always about, and not everybody's gonna see. Even me and you talk to each other. We're not gonna agree to everything. So that's the thing about trading. Not lots of people gonna agree to everything. Lousy भाई ऐसे ही दिन पे tilt आता है, तो always remember, if you are taking trade, it's absolutely fine, right? If you think that I just need to improve one thing and I'm gonna be on TP these days, it's fine. बट वो अकाउंट ब्लो मत करो जो पे आउट के नजदीक है, जिस पे तुमने प्रोग्रेस बनाया है। बंद कर दिया यार, बंद कर दो, आपको जो लगता है वो करो। और मैं तो बोलता हूँ मेरी भी मत सुनो गाइस, मेरी भी मत सुनो। मेरी भी क्यों सुनोगे तुम? मेरी भी क्यों सुनोगे? You will have to make it suitable for you, because this is the prime time to trade. Aryan Patel, I don't think so. If you're a beginner, you should trade 30 seconds, 1 minute only. Average payout approval time in Apex 2 to 3 days. Average payout approval in Lucid 1 to 2 minutes. Am I the greatest promoter ever, guys? Am I the greatest promoter ever? My voice is low. Hello, 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 hello. Again, I put that kind of hassle every day, so it's fine. If it took me out today, overall in the end of the year it will be profitable for me. So I'm not thinking about too much. Okay. एक्यूरेसी का कोई मतलब नहीं होता है. इट्स ऑल अबाउट कि तुम्हारे पास फंडेड अकाउंट आया और पहले 2 ट्रेड कैसे गए. टू बी ऑनेस्ट, दैट्स ऑल इट मैटर्स. But I guess 60 to say 65% will be alright. But what the fuck is this melt? Lots of you gonna kill me if I show you what I have done in my evals. I just need to make small bit in this one eval and then I'm gonna be done. Come on, baby. Alright. Little discretion in the way, or pure discretion चाहिए. You gotta need discretion. Do you still miss your UK days? भाई बंदे बीच बीच में आके क्या पूछ लेते हैं. But sir, how much account should I buy as a beginner? 1, 2, 3. It is not dependent on my suggestions, guys. It is dependent on you guys and how much buffer you are coming with. Always start with one account. Buying का कुछ मतलब नहीं है. Start with one account, but always have buffer to go. It's shorts, guys. It's shorts from this week till scaling out, scaling out, scaling in, scaling out, scaling in. Evals.
It will be posted on my Instagram if you are looking for the updates. Okay. Instagram से भी थोड़ा प्रमोशन हो जाए. और गाइस स्ट्रीम एंड करें, 2 घंटे हो चुके हैं. स्ट्रीम एंड करें. कितने बजे? 9, 9:30 बज गए. 8 मार्च से वैसे भी मार्केट 7 बजे खुलने लगेगी. सो दैट टाइम विल बी नाइस फॉर अस टू ट्रेड. प्रतीक भाई, हाँ, वही मंदी कर रहे हैं. Capital, it's very hard to say trading gains because I lost 22,000 pounds in live accounts on my first week, and then I started evals trading. I think I blew 62 evals before I became profitable. So because I had no guidance whatsoever, I did not have ICT concept. I did not know what I was doing. But as you guys have the guidance right now of anybody, uh, then I think you can reduce that to 20 to 30 evals में तुम सब समझ सकते हो. And if you stick to one strategy for 6 months, that is what I want. You will figure shit out on your own. PNL, अरे चलो PNL देख लो. ये पुरानी PNL है, उसको अपडेट कर रहा हूँ. ओके गाइस, इस दिन को रिमेम्बर करते हो? तुम्हें इस दिन याद है क्या हुआ था इस दिन? दिस इज टुडेस PNL गाइस, दिस इज टुडेस PNL. आज की है ना? हाँ. 44, 54, 54, 54, 172. यस, यही है आज की. ओके. वो 10,000 लॉस वाला दिन तो भाई अभी भी दर्द कर रहा है मुझे. 2 अकाउंट फ्लिप हो चुके हैं पे आउट वाले, और 3 में 4500 बन गए. तो 1500 रिकवर करके मैंने 4500 इस ड्रॉप में बनाए. इज इट द फैक्ट दैट आई रिस्क एवरीथिंग? आई डिड. आई डिड रिस्क 500, $600. हाँ वही नहीं. रिस्क कितना, किस में कितना करते हैं? फंडेड में मत करो. फंडेड में तो मैं कर ही नहीं रहा अभी. ये तुम ये समझ लो, याद रखना, जब मेरे पास फंडेड अकाउंट आ जाएंगे, जब मेरे पास ये 3 फंडेड अकाउंट्स आ जाएंगे, साला ट्रेडिंग के PNL तुम्हारे सामने खोल के रखा हूं. समझ रहे हो? वो ट्रेडिंग की PNL दिखेगी तुम्हें. तो तुम्हें लगेगा कि आई विल शो यू हाउ टू मेक इट टू द पे आउट लाइव. बस ये फंडेड अकाउंट्स आ जाने तो 1 ट्रेड और 2 ट्रेड पर डे वाला रूल से. ओके, you will understand why it is necessary, and you will see how I make it to the payout. Real raw things. I'll do some crazy shits in front of you, but again, अभी कल अगर चलो 4500 बन गए, कल नहीं बने तो ये 4500 का कुछ फर्क नहीं. तो इसका कुछ शाबाशी मैं लेता ही नहीं हूँ. दिस वॉज ऑल डन फॉर द वर्क. अगर कल 4500 बन गए, देन इट्स एवरीथिंग मैटर्स. अदरवाइज इफ आई ब्लो दिस इवल्स टुमारो, every work has gone to the wind. So it doesn't matter. यूके वाला बात, ये आई डू, याद आता है नहीं आता है. क्या बोलूं भाई जैक भाई आपको यार, दर्द समझो अब तुम. और ऐसा नहीं कि मैंने बिना बोले, अगर तुम स्ट्रीम में जाओ ध्यान से सुनो, इस एरिया तक मैंने बोला था कि आई एम गोना स्केल इनटू द शॉर्ट्स. ओके, जस्ट दैट आई डू नॉट वांट यू टू कॉपी मी एट दैट पॉइंट. कोई उसी है. And again, not entitled to show you my trading, entitled to show you what I do with it, and being transparent. But again, हमें भी बताओ यूके वाला क्रेज. बताएंगे कभी कभी, वीडियोस आ जाएगी, पूरी जर्नी की वीडियोस अभी वो भी डालनी है. मुझे भी व्यूज कमाने हैं ना, चीजें करनी है. हमें भी पैसे कमाने हैं. By the way, if anybody has not taken the advantage
of this deal. Do so. 50% off on any URL on Lucid Trading. I genuinely don't like to promote. I genuinely, how do I say in Trump voice? I need to bring out that voice changer wala cheese. Should I do that? Should I do that? But yeah, generally don't like to promote this much any firm, but Lucid has been absolutely banger for me, especially for everybody. I have seen my followers taking payouts, my fellow traders taking payouts. Crazy fun. Approving payouts in 1 or 2 days. That is fucking crazy shit. 1 or 2 minutes, sorry, 1 or 2 minutes. And sending money to the work market in half an hour. So actually they are paying you out in half an hour. Of course, work market से बैंक में time लगता है just because of the country we live in. But yeah, it's fine. अरे यार प्रतीक भाई, it's fine. क्या पता डाउनफॉल आने वाला था इसलिए डिस्काउंट ला दिया उन्होंने. And use code game for 50% ऑफ और लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से साइन अप कर सकते हो. मैं चैट में भी डाल देता हूँ अगर तुम्हें लिंक चाहिए चैट में. लूसिड की एक्सप्लेनेशन मार्क लूसिड कर दोगे तभी मिल जाएगी. और ये ले लो, ये भी है. ऑलराइट, I'll see you guys tomorrow. Thank you for joining. Not a W दिन, फंडेड्स के लिए थोड़ा बुरा दिन था, बट हाँ ईवाल्स के लिए again we did gamble our evals to $4,500. ओके भाई, क्रेजी कैमरा तो है भाई लाइटिंग के साथ. हाँ क्रेजी तो लग रहा हूँ मैं. क्रेजी लाइटनिंग. पे आउट लॉक संकेत जी भाई, क्रेजी. लेट्स गो. ऊपर लगा देता हूँ. Alright boys, thank you for joining. Use code Vedic. Fucking hell. Use code game for 50% off on your Lucid evals and 40% off on the Tradify. But yeah, I'll see you guys tomorrow. Sorry for the loss. आज का जो लॉस लिया इसके लिए तहे दिल से माफी मांगता हूँ. बट वी विल बी बैक ऑन द विनिंग डेज. यू नो दैट हमने कितना विन किया था फरवरी के स्टार्टिंग में, दिसंबर में. I'll see you guys tomorrow. Arigato. Gozaimasu. स्किन केयर रूटीन कल बताता. स्किन केयर रूटीन आई गेस फेस वॉश एंड दो ही चीज होती है. फेस वॉश एंड क्या वो आती है, मॉइस्चराइजर. कैन यू टेल मी योर डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ 9th of December 2000. रोलेक्स भेज रहे हो क्या? अरे भाई तुम कुंडली निकालोगे क्या? ओह या, स्किन केयर रूटीन ऑफ स्किन इज मनी. ऑलराइट बॉयज, सी यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, पीस. इधर हम गेम क्राफ्ट का लोगो लगाएंगे पीछे सुन. मजा आएगा. धीरे धीरे हम ऑफिस को अपग्रेड करेंगे. I'll see you. Bye. Peace. Today was the L day on the funders, W day on the evals after Indian draw पे चला गया मार्केट. So yeah, I'll see you. Bye. Take care. Lucid में भाई गेम कोड यूज करना Tradify पे भी. Bye. Peace.